Hi everyone, good evening. Can someone confirm on the chat if I'm audible? Okay, thank you. So, all of you have given your first attempt for Snap. Some of you might be giving the second attempt itself. You might have not given the first attempt. So, let's see exactly what to do for your second attempt. हम पहले अटेम्प्ट को बेंचमार्क कंसीडर करेंगे एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट हम डिसाइड करेंगे कि सेकंड अटेम्प्ट के साथ जाना कैसे है व्हाट वी आर सपोज टू डू एंड व्हाट वी ऑलरेडी डिड हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वेंट रियली वेल या हो सकता है डिड नॉट गो as you wanted it to go. So we'll learn from the mistakes, we'll learn from whatever skills we developed, and according to that, we'll go forward. Okay. Yeah, it's a good score. Getting 45, 46 marks is a good score in Snap 1. So, first of all, let's understand what kind of strategy we want to go with. Before we do that, let's see what were the expected marks versus percentile on basis. This is what we showed you in our analysis. 99 percentile should be somewhere between 45 to 47 marks. Yeah, depends. I don't know what the cutoffs are going to be for NMIMS this year. Last year they were as low as 209 and uske pehle they were at 232 marks. So it can fluctuate. No one knows what's going to happen with NMIMS. Can you guys confirm if am I clearly audible or if there is a lag? Can someone please confirm this on the chat? मेरा आवाज आ रहा है आप सबको क्लियरली? Okay. So these are the expected marks. Now second slot को लेकर what are our anticipations with respect to a slot 2? What are we expecting in slot 2 of Snap? So it can be a little difficult with compared to the first slot. तो आपका जो 99 percentile 45 47 marks के बीच में आने का expectations है, it can fall down a little bit for slot 2. Reason being slot 1 was already very easy compared to all your past 4 to 5 years of Snap examinations. So slot 2 probably will be a little bit difficult, 5 to 10% on the difficult side compared to slot 1. So आपको you can see this instead of 45 to 47 marks it can range from 43 to 45 marks for slot 2. तो पेपर आपका थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. पेपर थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि पेपर डिफिकल्ट है. कंपैरिजन करोगे स्लॉट 1 से तो इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट बट ओवरऑल द पेपर विल स्टिल बी इजी. Okay, it's lagging, just give me a second. Just confirm if it's still lagging. Can someone confirm on the chat if it's still lagging? Okay, thank you. Thank you, guys. So
सेकेंड स्लॉट इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी इजी अगर आप इसको कैट एनमैट जैट आपकी जो अदर एमबीए एग्जाम्स हैं उनसे कंपेयर करोगे तो इट्स स्टिल गोइंग टू बी इजी बट अ लिटिल बिट डिफिकल्ट विद कंपेयर टू द फर्स्ट अटेम्प्ट. तो पहले अटेम्प्ट में इफ यू आर स्ट्रगलिंग, डोंट वरी, you with a proper strategy you can score better than what you did last time, and percentile तो और ज्यादा better मिलेगा आपको. It's all about having the right kind of strategy in slot 2. अब exactly what your strategy should be. So from what we saw, how the first paper was, English was comparatively on the easier side. काफी quick questions से questions were like either you know them or you don't know them. So ज्यादा time waste करने में कोई sense नहीं है. You've got 15 questions. Per question, if you give on an average 30 seconds, you should be done with the section within 7 minutes. जो भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, जहां भी आपको लगता है कि नहीं समथिंग एल्स कैन बी डन, या probably I'm confused between some options, mark them for review and move on to the next question. Don't waste a lot of time in general English. General English changes your score a lot. I agree on that part. But ये भी this is the section जहां पर आप टाइम सबसे ज्यादा सेव कर सकते हो. Okay. And whatever time you save, you're roughly saving, अगर it's 60 minutes 60 questions, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में देख लिया है that snap is not your lengthy examination in sense कि क्वेश्चंस काफी इन डेप्थ नॉलेज चेक करते हैं. नो, इट चेक्स योर एप्लीकेशन नॉलेज बेस से आपके पास वेल इनफ, बट हाउ यू अप्लाई इट, कीपिंग क्वेश्चंस इजी अ लिटिल बिट, मे बी लैंग्वेज ट्विस्ट किया हुआ होगा, आपका एप्लीकेशन ज्यादा मैटर करता है. Yeah, nmat is comparatively on the difficult side compared to snap. आप whatever time you save in English, now that time is something you can divide amongst your next two sections. अब आपका जो सेक्शन है फॉर लॉजिकल रीजनिंग, you've got 25 questions in the section. Ideally it should take somewhere between 20 to 25 minutes. That's why we've given you your what 23 minutes to solve this particular section. अब 25 मिनट्स में यू विल बी एबल, आप 15 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे. कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पर यू आर स्टिल स्टक. स्नैप अगेन, इफ यू आर एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस प्लीज यूज. जितना आप एलिमिनेशन ज्यादा करोगे उतना आपका बेटर होगा स्कोर. यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस. your marking scheme is +1 -0.25. लेट्स से आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, अब आपके पास ऑप्शन बचा है ए एंड लेट्स से ऑप्शन बचा है सी. यू आर बेटर सुटेड टेकिंग अ गेस rather than leaving those questions. Once you move to the next sections, चाहे English हो, चाहे you are in logical reasoning or you are in quants, what you need to do is elimination will play a key role in questions which you are not able to solve. कुछ क्वेश्चन में होता है कि आप ऑप्शंस के मदद सॉल्व कर सकते हो. यूज वॉट एवर ट्रिक्स यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. एंड देन कम्स योर क्वालिटी. इट्स ऑन अ डिफिकल्ट साइड फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स. 20 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा टाइम लगता है, सो फॉर दैट रीजन यू कैन डेडिकेट अराउंड 25 मिनट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन. और एंड में आपके जो 5 मिनट बचेंगे, जो भी आपने क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू किया है, इफ दे आर इजीली सॉल्वेबल सॉल्व देम, या फिर कहीं गेस वर्क लेना है आपको बाय एलिमिनेशन, यूज इट स्ट्रेटेजिकली. दिस कैन बी योर मेक और ब्रेक. योर लास्ट 5 minutes, they can be the difference between you getting a call from SIBM Pune or you getting a call from some other college. How you utilize this 5 minutes will play a key role. ये 5 मिनट में you have to, if there was a question जहाँ आपको लगता है you might have done calculation error, especially in quants, quickly give it a review.
You'll waste 30 seconds, but remember, if by that reviewing that particular part, अगर आप वो क्वेश्चन को सही करते हो, तो you are saving yourself 1.25 marks. You're saving yourself from getting this negative mark and you are getting the positive mark. So every mistake that you correct in these 5 minutes and every question that you take a proper guess, it will give you additional 1.25 marks. Our target score in slot 2 should be somewhere between 40 to 45 marks for SIBM Pune. Ideally, it should be more than 42 marks. And your attempts should be somewhere around, let's say your overall attempts should be roughly 50 if you're going with 90% accuracy. If your accuracy is lower, you need to attempt more questions. But even if you have an accuracy of 95%, still attempt 50 questions, because the more you score, आपका जितना एग्जाम में स्कोर ज्यादा आएगा उतना आपको जीईपीआई राउंड में ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा. So this is how your basic strategy will look like. अब ये strategy का, this is one part of the strategy. There is a different strategy that you guys can go with. Rather than going section by section, there is another strategy last time मैंने mention किया था. Again, please don't change your strategy at the very last moment unless and until you're completely confused or you need that additional guidance. Second strategy होता है you're solving the paper in 3 rounds. You're solving the paper in 3 rounds. Now, by solving the paper in 3 rounds, मतलब क्या होता है, you're divided your 60 minutes. ये 60 minutes को आपने divide किया है 30, 20, 10. फर्स्ट 30 मिनट्स you're dedicating जो सबसे क्वेश्चन देख के सॉल्व हो रहा है हमसे, जो सबसे इजी क्वेश्चन है. तो पहले 30 मिनट्स में आप पूरे 60 क्वेश्चन देख लोगे. जो भी क्वेश्चन इजी लगता है आप सॉल्व करते जाओगे, और बाकी क्वेश्चन जो आपको लगता है आप सॉल्व कर सकते हो बट थोड़ा लेंदी है, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दोगे. इससे क्या होता है, आपने पहले 30 मिनट में सारा पेपर देख लिया है, तो देयर इज अ वेरी लेस चांस ऑफ यू मिसिंग आउट ऑन. हो सकता है कि यार क्वांट्स में आखिरी के 2 क्वेश्चन इजी थे बट हमने इतना टाइम वेस्ट किया स्टार्टिंग में, हमें वो 2 क्वेश्चन दिखे ही नहीं. तो ये वाला प्रॉब्लम इसमें आपका एलिमिनेट होता है. प्लस कोई इजी बीच में भी जो इजी क्वेश्चन है आपके सारे प्रॉपर अटेम्प्ट हो गए, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप ऑलरेडी उसको एक बार देख चुके हो. सो बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग इट इन राउंड 2, आपका एक व्यू हो चुका है उस क्वेश्चन को लेकर. इन द फर्स्ट 30 मिनट्स इट्स एक्सपेक्टेड कि आप रफली 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, बिकॉज दीज आर फेयरली द इजिएस्ट क्वेश्चन अवेलेबल इन द पेपर, और क्वेश्चन विच cater to your strengths. Am I audible, guys? Yes. Can someone please confirm if I'm audible or not? Or is there a lag? Okay, thanks Om. अब आपने क्या किया है, आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो गए. नाउ सेकंड अटेम्प्ट जो आता है, नाउ दिस इज द सेकंड राउंड इज फॉर क्वेश्चंस यू थिंक यू कैन सॉल्व बट आर अ लिटिल बिट लेंदी और अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. आपके ये 20 मिनट में यू विल बी एबल टू सॉल्व से 10 to 15 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट यू हैव डन इज विद इन द फर्स्ट 50 मिनट्स you have fairly solved around 40 to 45 questions. पहले 2 राउंड में आपने 40 to 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जहां पे ये 30 क्वेश्चंस में मोर और लेस you should be going with almost 100% accuracy.
In this 20 questions, considering आपको ये आता है but they were on the lengthier side या difficult side पे थे, you will be going with an accuracy of 90 to 95%. And over here, let's say you still end up doing some mistake to 96% to 100%. अब आखिरी 10 मिनट में आप क्या करोगे? Last 10 minutes will be for the most difficult questions या topics you're not familiar with or where you're using elimination approach and everything else. यहाँ पर आप again 10 to 15 depending on how you can do, sorry, 5 or 10 15 depends on what kind of strategy you're going with, how many guessworks you are planning to take. If you're able to eliminate options, लेट्स से आपने 10 क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, बेटर ऑफ यू हैविंग अ पॉजिटिव ट्रेड आउट ऑफ इट. बट अगर आप रैंडम गेस ले रहे हो 10 क्वेश्चन, won't give you the same amount of result it should have. And if you are saying आपने दो ऑप्शन एलिमिनेट किए बट यू आर गेसिंग ओनली टू क्वेश्चंस, तो पॉजिटिव ट्रेड मिलने का चांस उतना कम हो जाता है आपका, ऑफ यू एंडिंग अप गेटिंग अ पॉजिटिव स्कोर आउट ऑफ इट. आप निगेटिव स्कोर लेने के चांसेस हाई हो जाते हैं. So try to eliminate as many options as you can from whatever questions you are not able to attempt. और ये सबका एक बैच बनाकर fill them up in the last 10 minutes. अब ये जो आपके क्वेश्चंस है, whatever you are attempted over here, you will be with roughly 60% to 70% accuracy because these are the most difficult ones. Or in some cases, it can also give you only 50% accuracy as well. But still, you'll be getting positive marks. यहाँ पर there were questions with where you use elimination approach. There were questions which you were not too sure about, but you still ended up marking those answers. Overall, your attempts go as high as 50 to 55. But अगर आप ध्यान दोगे तो आपके जो accuracy level आती है यहाँ पर, your overall accuracy comes around 90%. Despite the fact कि यहाँ पे 50 to 60% accuracy थी, only because और द फैक्ट कि आपने स्टार्टिंग में इतनी हाई एक्यूरेसी मेंटेन करी है कि एंड के गेस वर्क्स भी आपको इनफ पॉजिटिव ट्रेड दे रहे हैं दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. बट लेट्स से देयर इज समवन who is not scoring, who is not targeting SIBM Pune and SMHRD. In that case, आपके attempts कैसे होते हैं? For you, this 30 minutes gives you at least 20 to 25 questions. This 20 minutes should give you 10 questions roughly. आपके 35 attempts, 10 to 12 क्वेश्चंस, 35 अटेम्प्ट हो जाते हैं पहले 50 मिनट में, और एंड के लास्ट 10 मिनट्स में यू स्टिल टारगेटिंग दोस 10 क्वेश्चंस which gives you roughly 45 attempts with 85 to 90% accuracy, which will give you a score in the range of 35 to 40 marks. What this does is essentially you are locking on the college you want. आप कॉलेज का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हो, नाउ यू आर क्रिएटिंग द बफर जोन फॉर योरसेल्फ. जितना एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे उतना आपका बेटर चांस होगा जीपीआई राउंड में ऑफ गेटिंग इनटू द कॉलेज, बिकॉज दैट विल प्ले एज अ क्वेश्चन. लेट्स से आपका पीआई थोड़ा सा खराब जाता है वो, बट आपको जो 2 मार्क्स का पुश चाहिए था वो 2 मार्क का पुश आपने ऑलरेडी स्नैप एग्जाम में कवर किया है. सो दिस इज व्हाट विल बी लुकिंग एट ओवर हियर. आई होप this second strategy everyone understood how you have to deal with it. Now coming to your snap examination, आप जब snap पेपर को देखोगे, first attempt has made it very clear the exam is not, it's not about your knowledge depth, it's about how much variety of knowledge you have and how good are you at applying that knowledge. Application ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे. Your experience, it will play a role in your GDPI, but it won't play a role in your selection for the GDPI round. So few things that we need to understand is slot 2 can be a little bit difficult than slot 1. On the difficulty scale, slot 2 can be tad bit difficult than slot 1. Second thing, exam is more application based. Your exam is more application based. So what you have to do over here is ensure कि आपने जितना भी पढ़ा है it's
you have covered certain variety, and you're practicing well. Third thing, considering your exam is just 36 hours away or probably 42 hours away, don't start too many new topics now. आपने जितना किया it's more than sufficient. Now you need to revise and now you need to ensure कि आपने जो पढ़ा है you are very well versed with it. Don't start a new topic in the last 2 days. You won't be able to cover it and it will just create a panic situation. Yeah, if you're not able to understand the topic, मेरे से तो हो नहीं रहा. That creates a panic situation. हमें वो नहीं करना है, हमें पैनिक नहीं होना है. We have to stay calm. जितना आप एग्जाम में काम रहोगे उतना आपका स्कोर बेटर होगा. Okay, is it still lagging so? Hello, sir, give a mock today. Okay, what we'll do is we'll keep all the Q&A at the very end once we are done with this strategy part. So, third point is no new topic. You can probably read a new concept. आपने जो चैप्टर किया है उसका आप कंसेप्ट कर सकते हो. You can focus on the concept, but don't start a new topic in the last 2 days. नया concept, एक नई ट्रिक, समथिंग दैट कैन हेल्प यू सॉल्व एट अ फास्टर रेट. अगर आपने आज का मैराथन अटेंड किया होगा तो आपको नए ट्रिक्स देखने मिलेंगे. शर्वरी मैम, नीरज सर, श्रीकांत सर, इन्होंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए होंगे. अप्लाई दोज ट्रिक्स, दे विल हेल्प यू अलॉट. बाय चांस आपने अगर नहीं देखा है मैराथन, आई सजेस्ट, आई रिकमेंड स्नैप 1 के पहले भी जो आपका मैराथन हुआ था, गो थ्रू इट एंड ऑल्सो चेक मैराथन फॉर स्नैप 2. Covered variety of questions and more. It was based on what you can do in the actual examination. आप कितने tricks use कर सकते हो. Applying these things will help you maximize your score. And fourth and most important, snap is a speed based examination. आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो. बट बाय चांस आप किसी क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट वेस्ट कर देते हो, अंडरस्टैंड, इट्स फाइन. आपने 3 मिनट वेस्ट किए, यू स्टिल हैव 95% ऑफ द टाइम लेफ्ट. यू हैव टू मैक्सिमाइज द रिमेनिंग 95%. वो 3 मिनट वेस्ट किए उसके टेंशन में और 3 मिनट वेस्ट नहीं करना है. अंडरस्टैंड दैट आपने जितना भी टाइम, जो भी आपका पेपर का है, जो फ्लो है, मैक्सिमाइज ईच एंड एवरी सेकंड यू हैव. बट गलती से टाइम वेस्ट होता है कहीं, तो उसके पैनिक, उसको लेकर पैनिक होने जितना टाइम आपके पास नहीं है. इट्स फाइन, इट्स डन. आप उसको बदल नहीं सकते. आगे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप बेटर कर सकते हो. आगे जो अटेम्प्ट कर रहे हो आप उसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, बट यू कैनॉट चेंज व्हाट यू हैव डन. सो एंश्योर यू आर इन वेरी काम स्टेट. पेपर में जाने के पहले keep yourself calm. It's just a 1 hour examination. It's not a 2 hour examination like nmat cat or a 2.5 3 hour exam like that. 1 घंटे का एग्जाम है. जितना काम माइंड से रहोगे, जितना आप आपके खुद के जोन में रहोगे, उतना आपका स्कोर बेटर आएगा. And some topics that you should be revising right now in the last 2 days with English, RCs, those complex RCs की जो हमें आदत हो गई है with CAT, ZAT and other exams. English वैसा नहीं है यहाँ पे. ग्रामर देखो, idioms देखो, synonyms, antonyms. There are few phrase, certain endings जिनका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, जो आपको मल्टीपल वर्ड्स में देखने मिलेगा. वहां पे फोकस करो, वो पार्ट रिवाइज करो. इट विल हेल्प यू अलॉट. एनालिटिकल लॉजिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, यार इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ओवर देयर. अगेन, जो इजी स्टैंड अलोन टॉपिक से रिवाइज देम. आपका ब्लड रिलेशन है, क्लॉक्स है, कैलेंडर्स है, देयर लीनियर अरेंजमेंट्स. यू आर नॉट गेटिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स एलआरडीआर सेट. कैट जैसा एलआरडीआर नहीं आने वाला है. अंडरस्टैंड द बेसिक नुआंसेस एंड इट विल हेल्प यू स्कोर बेटर. For quantitative, arithmetic still remains the backbone. As we saw in slot 1, arithmetic will be the heavy driver. To understand how you can increase your speed, calculation speed अगर बढ़ा सकते हो in the last 2 days, वहाँ पे focus करो. It will help you score better. और आपके जो standard formula है,
You must have created a book for yourself. Something must have been provided to you. Revise all the formulas क्योंकि जितना फॉर्मूला अप्लाई करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को उतना आप टाइम सेव करोगे. I guess for English I'm not sure, but LR and QA, but English में तो there was some handbook provided in the description of your YouTube live today. Go take a look at it. It's a 70-80 page book which covers a lot of things जो आपको एग्जाम में स्कोर मैक्सिमाइज करने के काम आएगा. और वो 80 पेज बुक कवर करने यू विल टेक हार्डली 3 hours. एंड वो भी 3 घंटे में बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूँ. इट विल हेल्प यू इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर. चेक कर लो एक बार डिस्क्रिप्शन में, कई क्वांट्स के भी डिस्क्रिप्शन में है कुछ अवेलेबल. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट yeah, there is a magazine. Thanks for correcting me. Yeah, there is a magazine which was given to you. It will help you in maximizing your score. जितना स्ट्रीमलाइन रखोगे अगले 36 आवर्स को उतना आप स्कोर मैक्सिमाइज कर पाओगे. नया चैप्टर करने जाओगे तो पुराना भी आपका रिवीजन होगा नहीं, पुरानी चीजें भी भूलोगे और नए को भी प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे. So next 36 hours, instead of the reason we had the marathon today, the reason we had the strategy session today instead of tomorrow was कि आप कल you are able to utilize tomorrow the way you want, the way you should be maximizing your score. So that's it. These were 2 cents from my side. If you guys have any queries, any questions that you want to ask, please feel free to ask those questions. I'll be happy to take those. Uh, you gave a mock today and your accuracy is somewhere around 50 to 60%. Look, first of all, if your accuracy is 50 to 60%, identify कि where you're doing the mistakes. Avoid those kind of questions जहाँ आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही है. जितना आप गलतियों से दूर रहोगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा. But obvious. So first and foremost, revise your mocks and understand where you can move away from wherever you were doing the mistakes और how you can ensure कि आप वो mistakes नहीं कर रहे हो. Happy to see you after years. Oh, hi Ganga. Are there any other queries, guys? Okay. In Snap 1, VA consumed more time for me. How to tackle this? But in mocks, I completed in max 9 minutes. So it's Marasas. Okay. Can someone confirm if I'm properly audible? Okay. So first and foremost, the reason आप VA में इतना टाइम कंज्यूम करते हो और आपका एग्जाम में नॉर्मल टाइम से ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज देर इज एन एडेड प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन. मॉक्स आप घर पे बैठ के यू आर गिविंग इट विथ योर कंफर्ट, यू आर इन योर कंफर्टेबल क्लोथ्स विथ योर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट. एक्चुअल एग्जाम में वो नहीं होता है. द बेनिफिट ऑफ गिविंग द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन गिविंग द सेकंड अटेम्प्ट ऑफ स्नैप इज यू आर ऑलरेडी सीन, आपने ऑलरेडी वो एटमोसफियर देख लिया है. अब आप पे उतना प्रेशर नहीं होना चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकेंडली, बिफोर यू गो इन टू द एग्जामिनेशन, calm yourself down. There are certain tricks, certain methods that you can apply, which, like, I used to listen to a few songs. They were my few go-to songs जो मुझे calm down करते थे. It can be some silent song. It can be, if someone into rock music, they can listen to that. Someone can listen some motivational song. But those kind of things helps you in creating the atmosphere, creating the zone you need before getting into the examination, where you're not pressurized by external factors. So tomorrow is my grad exam. Also would get free by tomorrow 5 p.m. 'm. 5 p.m.
Siddhi, considering your exam is getting over around 5 p.m., जो मैंने बताया, revise all the formulas for your cons, whatever were the key concepts that you think that you need, revise them. Don't focus on something too complex. If there is something that was too difficult for you, probably skip it for now, and whatever was easy, revise them thoroughly to ensure कि आप रहे हो. I'm confused about the attempt strategy in mocks. Sometimes I'll go with LR and sometimes with QA. So, Prabhu, whatever is working for you, actual exam में go with that. Because actual exam is not a mock. वहाँ पर you cannot play कि नहीं I'll do cons, I'll do LR. Whatever you think you'll be confident in, or probably give a quick look. Spend a minute, give a quick look. जो easy लगता है, start with that. This was much, yeah. So ensure guys that you're not panicked. You stay calm. You stay very much composed. Soham songs differ from person to person. I was listening songs. I gave the examinations way back in 2021, 2022. तो मेरे टाइम पे सॉन्ग्स अलग थे. अभी आप लोगों के गो टू सॉन्ग्स अलग रहेंगे. And moreover, I used to listen to old songs, something from the 90s era, 80s or 90s era. Those kind of songs soothe me